हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 1 कल हमने किया था, वो आज हम आगे करेंगे। कल हमने जो आपकी बुक में पिक्चर दिया है उसको डिस्क्राइब करने के लिए बोला था, वो हमने डिस्क्राइब किया और हार्ड वर्ड लिखा है, ग्लोसरी लिखा है। और आगे अब हम आगे पोएम है वाटर डांस, इसके बारे में लर्न करेंगे। The poem Water Dance reads about different forms of water. ये किसके बारे में, जो वाटर के अलग अलग फॉर्म होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं, इसके बारे में। जैसे कि रिवर, ओशन, लेक, ये सब वाटर के अलग अलग डिफरेंट फॉर्म होते हैं। पीपल से द वाटर इज़ वन थिंग बट अदर से दैट वाटर इज़ मेनी। In the terms of its various forms, water exists ever since the beginning of the world, and it keeps on this continuous cycle. Something it falls from the sky. In this case, it is the rain. आपको पढ़ने में आया होगा साइंस में, जो वाटर की साइकिल होती है इसके बारे में बात की है। समटाइम्स वाटर फॉल्स डाउन इन लार्ज अमाउंट. It keeps tumbling down and down over the rocks. Covered with moss through forest shadow, this form of water is mountain stream. Water keeps down from stone cliff, coiling and driving at the foot of the mountains. This form of water is the waterfall. जो माउंटन और स्टोन से आता है नीचे, उसको क्या बोलते हैं? वाटरफॉल। इन द शेडो ऑफ द माउंटेन्स वाटर कलेक्ट्स, इट इज स्टिल द डीप इट फील्स ओवरफ्लो. दिस फॉर्म ऑफ वाटर इज लेक. वाटर winds through broad golden valley and along its course it is joined the stream and creek. With their joining, it grows ever wider, broader and deeper. This form of water is river. जो बहुत ही छोटी नदी होती है, बहुत ही जिसमें पानी होता है, बहुत ही बड़ा इसका वाइड होता है, इसके बहुत ही उसका जो एरिया है वो वाइड होता है, बॉर्डर होता है और डीप होता है, उसको क्या बोलते हैं? रिवर। तो यहाँ पे वाटर की अलग अलग फॉर्म की बात की है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। और बोथ द रिवर एंड द सी, वाटर आगे करेंगे। वाटर पासिस थ्रू द गैप्स between high stone cliff, leaving the land behind. On the waves of it, cool silver moonlight shines, dancing. The form is the sea. sea क्या है इसका? इसमें डिस्क्राइब किया है कि water is drawn upward by warm sunlight. It is white silver droplets in the air. It says there for time being and then the disappears. This form is the mist. अलग अलग फॉर्म को इसमें डिस्क्राइब किया है। तो अब आगे है कि हाउ इज़ द रिवर डिफरेंट फ्रॉम द सी। रिवर है वो सी से कैसे अलग होती है? बोथ द रिवर एंड सी आर द फॉर्म्स ऑफ वाटर. बने बोथ क्या है? वाटर के ही फॉर्म है, बट दे आर डिफरेंट इन द मैनी वेज. River follows in winding course through broad and golden valley. It is it joined by stream and creeks. The adds to it volume and grows wider, broader and deeper. While the sea is a static form of water. When water flows down through the line of high deep cliff, collects at plain, leaving the land behind. It forms the sea. ये सी का फॉर्म क्या होता है, वो भी कैसे अलग होता है रिवर से? The waves of the sea seems dancing and shining brightly in the cool silver moonlight. moonlight में जो waves होते हैं
सी के वो कैसे होते हैं, जैसे कि डांस करते हैं, शाइनिंग करते हैं और ब्राइट होते हैं। अभी हम इसके वो हार्डवर्ड करेंगे, ग्लोसरी करेंगे। फॉल्ट, फ्लोट द मूव स्लोली इन द एयर। ड्रिफ्ट, the moving slowly and steadily from the one place to another. Storm, front, a mass of air that brings a storm, gleaming, shining brightly. Thundered, a part of large cloud often appears before thunderstorm. Rage, the spread very quickly. Drench, to make completely wet. Droplet, small drop. Reflect, to throw light back. ये मैं आपको फ़ोटो भी भेजूँगी और आपको इसमें ये अपनी नोटबुक में लिखने का है और आगे के बुक में जो है वो भी आपको लिखने का है और ये भी लिखने का है। फिर आगे मैं ये वर्कबुक की फ़ोटोग्राफ भी भेजती हूँ और अभी हम वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर करेंगे और एक्टिविटी 5 आगे फिर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये सबसे पहला वर्कबुक में क्वेश्चन है कि राइट द 5 सेंटेंस टू डिस्क्राइब द पिक्चर। जो बुक में पिक्चर है वही पिक्चर वर्कबुक में भी दिया हुआ है, वो लिखा है कि इसके बारे में आप लिखो। तो दिस इज़ पिक्चर अबाउट द नेचर। इन दिस पिक्चर देयर इज़ रेनफॉल, some students are going to school, there is water on the road, some students have umbrella. People are enjoying rain and trees are also wet during the rain. ये क्या है? फिर आगे क्वेश्चन आंसर है। Who says some people say I fall from the sky? Why it is said so? In the answer है in the poem water dance rain says that this is said so because water has many forms but at one glance it is one thing. Water moves in an endless circle. How is the mountain stream differ from the rain? Rain falls on the mountain and mountain streams shower from the top in the form of the small waterfalls and falls down on the rocks covered by moss in the shadow of the forest. इसके बाद का क्वेश्चन है हाउ कैन यू से दैट वाटरफॉल इज यूनिक बॉडी ऑफ वाटर। व्हेन रेन फॉल्स ऑन द माउंटेन और हिल्स water from the mountain shower from the top of the small waterfall flow on the rocks and it is jumps down and from river, so it is said unique body of water. How is the river different from the sea? The river is originating from the mountain, a small stream, and passing through the Golden Valley. It is quite different from the sea. Sea passes through high fencing made of the stones. Small streams merge together a river, and it grows wider, brighter, and deeper, and finally it meets the sea. With sea moves while sea moves its open place with the silver moonlight shining and dancing on its waves. What do you mean by the lines drawn upward? I disagree. In the above lines, it means water vapor rise upwards when the warm sunlight falls on it
it move upward and make thin cover of white clouds like this water lies appear in form of the vapor rises into air and form clouds. तो ये आपको लिखने का